good evening, everyone. Today we will talk about Eupatorium perfoliatum. So आज हम लोग बात करेंगे Eupatorium perfoliatum के बारे में. So before starting to this medicine, first we will talk about the introduction. पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि जेएच क्लार्क ने क्या कहा है इनकी किताब का नाम है डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मैटेरिया मेडिका. द नेम ऑफ द बुक इज डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मैटेरिया मेडिका विच इज रिटन बाय जॉन हेनरी क्लार्क. ये बुक का नाम बताने के पीछे रीजन है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मैटेरिया मेडिका किसने लिखा है. सो आंसर विल बी जेएच क्लार्क. J.H. Clark. So just try to remember J.H. Clark. He has written. The name of the book is Dictionary of Practical Materia Medica. So before starting to this medicine, first we'll talk about the introduction. So what he said. क्या ये कहते हैं Eupatorium perfoliatum के बारे में? Eupatorium perfoliatum is an old world remedy having been recommended by discouraged for ill condition, ulcer, dysentery, stings of reptiles, chronic fever, obstructed liver. Means, do you know who is the discouraged? Can anyone tell? Discouraged कौन है? Father of materia medica. Yes, very good, excellent. He is the father of materia medica. कई बार क्वेश्चन आता है father of materia medica. MM. तो ये कई बार क्वेश्चन आता है यूपीएससी में भी और AIAPGET में और यूपीपीएससी में भी. तो ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है. फादर ऑफ मेटेरिया मेडिका इज डिस्कोराइड्स. एलन में कहा लिखा है? कैन एनीवन टेल? ये नाम कहाँ पे लिखा है एलन में? एलियम. यस, वेरी गुड प्रवीण. एलियम सेपा मेडिसिन के अंदर लिखा हुआ. सो डॉक्टर Discouraged has been used this medicine, especially there is a condition. किस कंडीशन में यूज किया डिस्कोरेंट्स ने? स्पेशली अल्सर के केस में, डिसेंट्री के केस में और स्टिंग्स ऑफ रेप्टाइल्स. आइदर किसी माने इंसेक्ट बाइट हो या फिर रेप्टाइल के द्वारा ये हो, उस कंडीशन में भी यूज किया गया है. एंड इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिंस सो मेनी इयर्स और सिंस सो मेनी डेज ही इज सफरिंग फ्रॉम हाई ग्रेड ऑफ फीवर. यदि किसी व्यक्ति को हाई ग्रेड फीवर है तो भी यूज कर सकते हैं. इफ देयर इज ऑब्स्ट्रक्टेड लिवर or obstructive jaundice is there, in that condition we can also use this medicine, and this is recommended by discouraged. ये डिस्कोराइड ने यूज किया है और ये कहां पे लिखा है? ये जेएच क्लार्क की किताब में लिखा है. किताब का नाम क्या है? डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मैटेरिया मेडिका. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड द लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स होम्योपैथिक यूज is the distressing bone pain. Means अगर इस दवा को प्रिस्क्राइब करना है तो what is the most characteristic symptoms? What is? Means suppose if the patient is coming to you and that patient is having a fever. यदि कोई व्यक्ति आता है, उसको ज्वर है, बुखार है, उसके साथ उसके हड्डियों में दर्द है, bone pain is there, and this is the characteristic symptoms and that we can correlate with the disease condition. किसी बीमारी से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं. लाइक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में क्या बीमारी हो सकता है? फीवर के साथ अगर बोन पेन है तो व्हाट कैन बी द डिजीज कंडीशन? कैन एनीवन टेल? Dengue. यस, वेरी गुड. डेंगू. वेरी गुड जोस्ना. एंड चिकनगुनिया. वेरी गुड. चिकनगुनिया. यस. एंड मलेरियल फीवर. मलेरियल फीवर. इन्फ्लुएंजा. तो सपोज अगर ऐसा कोई बीमारी हो रहा है, डेंगू होगा तो भी बोन पेन होगा, चिकनगुनिया होगा तो भी बोन पेन होगा, और मलेरिया होगा तो भी, और इन्फ्लुएंजा होगा तो भी. सो in this condition we can think about Eupatorium perfoliatum. And in case of a dengue, if the person is having a fever, डेंगू के केस में क्या होता है? फीवर होता है तो हमारा प्लेटलेट काउंट घटता जाता है. प्लेटलेट काउंट घटता जाता है. सो जनरली
वी आर प्रेस्क्राइबिंग दिस मेडिसिन टू इंक्रीज द प्लेटलेट काउंट। कई बार होता है इस मेडिसिन को हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए। इवन द एलोपैथिक फिजिशियन आर फेल टू इंक्रीज द प्लेटलेट काउंट। कई बार होता है जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो दवा दे देकर थक जाते हैं, सो they will ask to take the homeopathic medicine, and that is a very good medicine, that is Eupatorium perfoliatum, and it will increase the platelet count। ओके अगर घर में कोई बीमार हो या रिलेटिव में या कोई पेशेंट तो प्लेटलेट काउंट कम है तो हम लोग यूपेटोरियम 200 वी कैन प्रेस्क्राइब दिस मेडिसिन। ओके एंड दिस वाज द क्वेश्चन। ये जितना अभी देख रहे हो कॉमन डिजीज है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फीवर। So this was the question has been asked in my interview when I appeared for the UPPSC interview। यूपीएससी का जब मेरा इंटरव्यू था तो उसने पूछा डॉक्टर साहब आप दवा जानते हैं इन सब के लिए? देन आई सेड yes sir, I know that the medicine। I totally reply the medicine like arsenic album is there, eupatorium perfoliatum is there, belladonna is there, brania is there। Okay, then again he asked this another condition like chikungunya, he asked same medicine is there, you have to answer the same medicine। Okay, if there are different type of condition like dengue है तब भी ये 4 मेडिसिन होंगी, और मलेरिया है तो भी, इन्फ्लुएंजा होगा तो भी, because the symptom is very similar। Okay, so this is what Dr. J.H. Clark has said in his book। The name of the book is Dictionary of Practical Medica। उन्होंने अपनी किताब में इन 4 बीमारियों के बारे में बोला है, और जिसको रिकमेंड किया है, किसने रिकमेंड किया है? डिस्कोराइड्स। और डिस्कोराइड कौन है? कैन एनीवन टेल हु इज डिस्कोराइड्स? फादर ऑफ मटेरिया मेडिका। Yes, father of materia medica। Very good, excellent, very good। Okay, so you can see in the picture this is Eupatorium perfoliatum। Okay, so can anyone tell me which part of the plant is used in the preparation of medicine? इस मेडिसिन का कौन सा पार्ट दवा बनाने के लिए यूज करते हैं? कैन एनीवन टेल? Flowering top and fresh leaf. Yes, very good। You can see this is a flowering top। ये क्या है? फ्लावरिंग टॉप है, यही दवा बनाने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे जो लिप्स है इनके, ठीक है, ग्रीन ग्रीन लिप्स है जो, एंड लिप्स इज ऑल्सो यूज। तो जनरली क्या है? फ्लावरिंग टॉप, फ्लावरिंग टॉप। ओके, फ्लावरिंग टॉप दवा बनाने के लिए यूज करते हैं, एंड फ्रेश लिप्स। ओके, पिक्चर में देख सकते हो ये फ्लावरिंग टॉप है और फ्रेश लिप्स। ओके, ये दोनों चीज दवा बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर आता है क्वेश्चन which part of the eupatorium is used in the preparation of medicine, so answer will be flowering top and fresh leaf। अगला क्वेश्चन आता है कि ये मेडिसिन कौन से क्लास में प्रिपेयर होता है? अगर हम लोग फार्मेसी से कोरिलेट करते हैं, सो अंडर विच क्लास दिस मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड? कैन एनीवन टेल? Class 3. Yes, very good, excellent। This medicine is prepared under class 3। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि Eupatorium perfoliatum is prepared under which class? So answer will be class 3rd। Okay, so can anyone tell me the name of a prover who has proved this medicine? किसने प्रूव किया था इस मेडिसिन को? What is the name of prover? Williamson is the man। Okay, Williamson। ओके, क्रिकेट देखते हो ना? क्रिकेट में न्यूजीलैंड का कैप्टन कौन है? विलियमसन। तो विलियमसन इज द मैन हु हैज प्रूव दिस मेडिसिन। विलियमसन ने इस मेडिसिन को प्रूव किया। ओके, सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, डोंट गेट कंफ्यूज, कभी कंफ्यूज मत होना। विलियमसन, ओके, न्यूजीलैंड का कैप्टन है, तो याद रखना कि ये कैप्टन ने ही इस मेडिसिन को प्रूव किया, यूपेटोरियम को। अगर भूल जाए तो याद रखना ये ई है ना, ई को उल्टा करोगे तो ये डब्लू बन जाएगा। तो याद रखना ये ई है, तो ऐसे याद कर लेना कि ये उल्टा ई है, ठीक है। तो ये क्या है? डब्लू की तरह दिखेगा, तो याद रख लेना डब्लू से नाम है। डब्लू से कौन है? विलियमसनवा है, ठीक है, याद ऐसे रख लेना। द नेम ऑफ द पर्सन इज विलियमसन हु हैज प्रूव दिस मेडिसिन। ओके, okay, so these are the common name of Eupatorium perfoliatum। Okay, so just try to remember। Okay,
The first name is Bonsait. Sorry. Okay. The first name is Bonsait, and this medicine is also known as, इस मेडिसिन का दूसरा नाम भी है थोरुगवर्ड, एंड इसे एग्यूवीड भी कहते हैं। ओके, एग्यूवीड का मतलब कि अगर फीवर हो रहा है तो फीवर जो होता है तो हम उसको एग्यू भी बोलते हैं। सो जनरली दिस नेम हैज बीन केप्ट ऑन द बेसिस ऑफ फीवर। ओके, ये क्रॉस वर्ड भी इसका नाम है, एंड फीवर वर्ड भी है, क्योंकि फीवर के केस में देते हैं तो फीवर नाम भी है। ठीक है। स्वेटिंग प्लांट, क्योंकि क्या होता है इस मेडिसिन को लेने के बाद स्वेटिंग भी होता है, इसलिए इसका नाम भी स्वेटिंग प्लांट है। एंड इंडियन सेज भी इसका नाम है। ठीक है। एंड वेजिटेबल एंटीमोनी। सो हाउ यू विल रिमेंबर, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर। ओके, इसका याद रख लेना छोटा सा नाम। ठीक है, बैटी याद कर लो ना। ओके ओके, बाटी याद कर लो। ठीक है, बी फॉर बोन सेट हो गया, ए फॉर एग्यू वीड हो गया, टी फॉर तोरुगवर्ड हो गया, आई फॉर इंडियन सेग हो गया। ओके, सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर। ओके, बाकी क्या क्या बचा है तुम्हारा, फीवर वर्ड बचा है, एंड स्वेटिंग प्लांट बचा है, और वेजिटेबल एंटीमोनी। ओके, तो जस्ट हम इसको याद कर लेंगे CSF करके। ओके, CSF। ओके, CSF, CSF क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। C फॉर क्रॉसवर्ड, S फॉर स्वेटिंग प्लांट, एंड F फॉर फीवर वर्ड, एंड V फॉर vegetable antimony. Okay, so just try to remember these are the common name, and this is the mnemonic how we can remember. Okay, and this medicine is prepared under class 3, we have already discussed. Okay, so let's talk about the symptoms of eupatorium. Adopted to diseases of old people, worn out constitution, especially from inebriety, cachexia from prolonged or frequent attacks of bilious or intermittent fever. सपोज यू कैन सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हो बहुत ज्यादा जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्न आउट, मींस एग्जॉस्टेड फीलिंग, टू मच वीकनेस, डेबिलिटी फीलिंग। यू कैन सी बहुत ज्यादा कमजोरी को ही हम लोग बोलते हैं वर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड व्हाई दिस पेशेंट इज हैविंग, because earlier having the history of drinking alcohol. Okay, so the patient will be suffering from worn out constitution, बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाएगा, and that's why कमजोरी होगा तो क्या होगा, कैचेक्सिया भी हो जाएगा। if the patient will be suffering from any kind of problem, like we have read obstructed liver क्यों होगा, obstructed jaundice क्यों होगा, because the patient is drinking alcohol since so many years, and that will lead to the cirrhosis of liver, and obstructive jaundice it will lead. ओके, एंड क्या होगा जब जॉन्डिस हो जाएगा तो इसको क्या होगा, दुबला पतला हो जाएगा, टायर्ड फीलिंग होगा, वीकनेस होगा। ओके, एंड देयर विल बी अ retain. Okay, you can see frequent attacks of bilious or intermittent fever, and if the person is suffering from the fever, क्या होगा, high grade fever is there, that will lead to the weakness of patient. तो क्या होगा, दो चीज हो जाएगा, bilious means there will be involvement of the इंटेस्टाइन इन्वॉल्व रहेगा, और बहुत दिन से अगर फीवर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो पसीना होगा, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगा, और स्वेटिंग होगा तो क्या होगा, वेट लॉस होगा तो क्या होगा, कैचेक्सिया हो जाएगा, मतलब लीन थीन, दुबला पतला, केकड़ा की तरह, कहते हैं ना केकड़ा की तरह दिख रहा है, मतलब लीन थीन द पेशेंट विल बी लुकिंग। सो वी कैन थिंक अबाउट दिस मेडिसिन, बट हियर we were talking about the alcohol. So this alcohol we can correlate with the repertory. So can anyone tell me in Kent repertory under which chapter we will find alcohol? Kent के कौन से चैप्टर में ये मिलेगा हमें, केंट के Mind. यस, केंट में कितने चैप्टर है पहले ये मुझे बता दो। 37 यस, वेरी गुड, यस 37 चैप्टर, ये क्वेश्चन आता है हाउ मेनी चैप्टर्स आर गिवन इन केंट रिपर्टरी, सो आंसर क्या होगा, 37 चैप्टर होता है। ठीक है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड एंडिंग विद द जेलिटी, जो कि माइंड चैप्टर से शुरुआत होता है, एम से स्टार्ट होता है और जी पे खत्म होता है, बीच में बहुत सारे चैप्टर हैं। ओके,
तो एम वाला क्या होगा, माइंड से स्टार्ट और जी से खत्म, मतलब जेनरलिटीज पे खत्म होगा। सो अंडर विच चैप्टर यू विल फाइंड दिस एल्कोहल रूब्रिक, कैन एनीवन टेल? Mind. Under mind Mind. chapter, under mind chapter you will find, this is the mind, this is the mind, under mind chapter you will find। तो M for mind होता है, M से रूब्रिक है रिलेटेड, क्या है, मेनिया अपोटू। ओके, मेनिया अपोटू जो कि एल्कोहल से रिलेटेड है, ठीक है, मेनिया अपोटू। दूसरा रूब्रिक है, कैन एनीवन टेल, क्या नाम है दूसरा रूब्रिक का? Dipsomania. यस, यस, वेरी गुड, डिप्सोमेनिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, डिप्सोमेनिया। अब डिप्सोमेनिया का मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू, इसका मतलब मैं बता देता हूं। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है अ मैनिएकल डिजायर फॉर अल्कोहल, मिस पागल हो जाएगा, माँ दारू दारू दारू, प्लीज गिव मी दारू दारू दारू। उसको ना चिकन चाहिए, ना मटन चाहिए, ना बिरयानी चाहिए, उसको चाहिए ओनली दारू। कुछ मत दो, कुछ मत दो, ना रुपया दो, ना पैसा दो, उसको सिर्फ दारू दे दो। हाँ माँ एक पेगे खूब बालो, खूब अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है, दारू मिल गया, दारू। दिस इज द मैनिएकल डिजायर, विदाउट ड्रिंकिंग अल्कोहल ही कैन नॉट स्टे कूल एंड काम। जब तक दारू नहीं मिलेगा वो शांत नहीं बैठेगा। दारू दे दो, खाना दो या मत दो, बस सो जाएगा पी के, वाह मजा आ गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिप्सोमेनिया। ये रूब्रिक आता है क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनिया ओपोटू और डिप्सोमेनिया। पूछता है क्वेश्चन यूपीएससी में और यूपीपीएससी में और एआईपीजेट में कि ये कौन से चैप्टर में मिलेगा। सो आंसर क्या होगा, टेल मी? Mind. यस, Mind. अंडर माइंड चैप्टर। Another symptom is there, bro is feeling as broken all over the body. Means when the patient is suffering from the fever and he will be having a bone pain, so he will be feeling मादे टूट रहा है, बदन टूट रहा है। The patient will explain you when he will be coming to your clinic, in your clinic, then he will ऐसा लग रहा है बदन टूट रहा है। Means when you are getting फीवर के साथ अगर बॉडी एक मिल जाए, फीवर प्लस बॉडी एक, द मेडिसिन इज यूपेटोरियम परफोलिएटम। ओके, सो द पेशेंट विल बी एक्सप्लेनिंग कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है बदन टूट गया, पूरा बदन टूट रहा है। बुखार के साथ बदन टूटेगा तो एक ही दवा है, यूपेटोरियम परफोलिएटम इज द मेडिसिन। बट आई वांट टू कोरिलेट विद द अनदर मेडिसिन, ब्रूइस फीलिंग और कौन सा मेडिसिन में होता है, कैन एनीवन टेल? आर्निका, बेलोरॉन है, Arnica. पाइरोसिन है। Yes, very good, Hinduja. Very good, Arnica, Ruta, excellent. Pyrogen. Yes, very good. Arnica, pyrogen. Okay, very good, Amit. And Baptisia is also there. And Ruta. Okay. Ruta भी है। Yes, Ruta. Okay. So these are the medicine. But I want to tell कि यूपेटोरियम में तो ये लिखा है, अर्निका कब सोचेंगे? When there is a bruise feeling, sore lame bruise feeling, छूने से दर्द, छुओ मत प्लीज प्लीज, डोंट टच डोंट टच, द पेशेंट विल से डोंट टच, उसको छूने से ही दर्द आ रहा है, then we can understand this is a arnica. But when we will think about pyrogen, pyrogen is having sore limb bruise feeling, but we will find so much weakness and sepsis condition we will find where there will be a rise of temperature, then only we can think about pyrogen. But when we will think about baptisia, when we will think about the baptisia, in baptisia we will find all the exhalation, all the discharges, vomiting, diarrhea, everything will be very offensive. बुखार के साथ उसका जो भी डिस्चार्ज होगा बहुत बदबूदार होगा, छी कितना बदबू आ रहा है, कितना बदबू आ रहा है, then only we can think about the baptisia is the medicine. But when we will think about ruta, when there will be a pain especially related with the tendon, then only we can think about ruta. Okay, so this is the basic difference between each medicine. Okay, another symptom, bone pains affecting back, head, chest, limbs, especially wrist, as if dislocated. Means there will be a so much pain especially in the hand, इतना ज्यादा दर्द होता है, ऐसा लग रहा हो कि जो हड्डी है ना खिसक गई हो, there will be a dislocation of the wrist joint.
ऐसा लगता है कि रिस्ट जॉइंट उसका खिसक गया हो. सो देयर विल बी माँ को बेटा. The patient is crying because of pain. The patient is feeling that wrist as if dislocated. Okay, then only we can think about this medicine, and this pain is coming. Pain क्या होता है? The pain is coming. Pain is coming and goes suddenly. ये जल्दी से आया और जल्दी से चला गया. This is sign. Okay. Pain comes quickly and go quickly. But I want to correlate with the another medicine. When the pain is coming, ये समझ गए, ये यूपेटेरियम का पेन है. कम सडनली, गो सडनली. ओके, अब मैं ब्राइनिया का बताता हूँ. नो, बेलाडोना का पेन बताता हूँ. कम सडनली. ओके, कम सडनली, लास्ट फॉर फ्यू मिनट. कुछ देर ये रहता है, ये जो है ना कुछ देर रहता है, एंड देन इट विल गो सडनली. ओके, आया, तुरंत आया, कुछ देर रुका एंड तुरंत चला गया. दिस इज बेलाडोना. ओके, so this is the belladonna. The pain is comes suddenly, lasts for few minutes or few seconds or few hours and goes suddenly. Then only we can think about the belladonna is the medicine. Okay, and another medicine is there. The pain is come suddenly and returns suddenly. The medicine is chromium acid. Okay, मैंने previous class में बताया था chromium acid. Okay, okay, so just try to remember. Okay, another symptom. Vertigo sensation as if falling to the left. Cannot turn the head to the left for fear of falling. Means you can see sensation as if falling. ऐसा लगता है अगर गर्दन बाएं तरफ घुमा लो, अरे माँ गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा. You can see in the picture. आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि अगर if the patient is turning head to the left side, so he will be having a sensation, I'm falling down, falling down, falling. ऐसे गिर रहा हूँ, गिर रहा हूँ, गिर रहा हूँ, गिर रहा हूँ. That type of sensation you will find. Then only we can think about Eupatorium perfoliatum. But this vertigo I want to correlate with the Kent repertory. So can anyone tell me under which chapter of Kent repertory we will find this vertigo? Can anyone tell? So, chapter for vertigo. Separate Yes, chapter. there is a direct chapter for the vertigo. लेकिन अगर रुब्रिक आएगा तो रुब्रिक ये पूछता है, रीलिंग इज द रुब्रिक. ओके, रीलिंग कई बार पूछता है. ओके, तो रीलिंग भी वर्टाइगो के लिए रुब्रिक है. ओके, लेकिन अगर वर्टाइगो पूछेगा तो ये डायरेक्ट चैप्टर है, वर्टाइगो डायरेक्ट चैप्टर है. लेकिन अगर रुब्रिक आएगा तो रीलिंग आएगा. ओके, ओके, सो अनदर सिम्टम इज देयर. कैन नॉट टर्न the head to the left for fear of falling. That patient is having so much fear. If I will turn head, if I will head turn, especially to the left side, so there will be a vertigo. So I will not turn. माँ बाँह देके घूरले ही बेथा, बाँह देके घूरले ही माता घूरे. Means मम्मी मैं अगर लेफ्ट साइड घुमा लूं मुझे चक्कर आएगा. I am having a vertigo while turning head to the left. So that patient will be having a fear. So can anyone tell me name of the medicine? कौन सा मेडिसिन है? Colocynth. कोलोसिन. कोलोसिन. Colocynth. Yes, very good. Colocynth and conium maculatum is the medicine. Okay. Another symptoms, cough chronic, loose with hectic. Chest sore, must support it with both hands. Support it with hands. Aggravation at night following measles or suppressed intermittents. Suppose if the patient is coming to you, that patient is having a cough, chronic cough is there, and that will causing a hectic, and that will causing a so much pain, especially in the chest. And if the chest is so much pain, a soreness is there, that's why the patient will put the hand. You can see, आप पिक्चर में देख सकते हो, चेस्ट इतना सोर हो जाता है, इतना दर्द लगता है कि वो सपोर्ट करता है. एंड ही विल पुट द हैंड्स ओवर द चेस्ट. यू कैन सी, आप देखो छाती पे हाथ रख के, देन ही विल then he will cough like this. Okay, and it will always aggravate, especially in the night. Okay, and if there is a suppression of the intermittent fever or measles, then we can think about this Repertorium perfoliatum. Okay, but here the word is measles is written. I want to correlate with the
community medicine. What is the causative organism? Can anyone tell? I have already told. Just tell me. RNA myxovirus. यस वेरी गुड एक्सीलेंट. कई बार क्वेश्चन आता है आइदर ये प्रिवेंटिव सोशल ऑफ मेडिसिन से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, तो आरएनओ मिक्सोवायरस. ओके, ये याद रखना है. ओके, मिक्सोवायरस वहां से क्वेश्चन आ सकता है. ओके, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मिजल्स देन अगेन आई विल टॉक अबाउट द पैथोग्नोमिक सिम्टम. इसका पैथोग्नोमिक सिम्टम्स क्या है या साइन क्या है? कैन एनीवन टेल? Public spot. Coplic spot. Coplic spot. यस वेरी गुड. कोप्लिक स्पॉट, वेरी गुड एक्सीलेंट. कोप्लिक स्पॉट. ओके, ये क्वेश्चन आता है. अब क्वेश्चन कई बार घुमाता है. कोप्लिक स्पॉट इज फाउंड इन विच केस ऑफ और इन विच कंडीशन? ऑप्शन में ब्रोंकियल एजमा, मीजल्स एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया दे दिया. सो आंसर क्या होगा? मीजल्स. ओके, बट कहां पे मिलता है ये? टेल मी व्हाट इज द साइन? यस वेरी गुड हिंदुजा. सेकेंड मोलर टीथ, वेरी गुड. ये भी क्वेश्चन आता है कि कहां पे होता है. ओके, सो आंसर विल बी सेकेंड मोलर टीथ. ओके, वेरी गुड. बट कैन एनीवन टेल मी द अनदर मेडिसिन जहां पे पेशेंट छाती पे हाथ रख के खांसता है, और कौन सा मेडिसिन है? कैन एनीवन टेल? ड्रोसेरा and natrum sulf, not natrum carb. Okay, especially in case of a cough condition, if the patient is putting hand over the chest and he will cough, the name of the medicine is Drosera. Okay, Drosera and natrum sulf, not natrum carb. Okay, natrum sulf. Okay, but प्रीवियस क्लास में ज्योत्सना ने ब्राइनिया बोला, आज हिंदुजा ने बोला. क्या लिखा है उसमें? What the brainia, in brainia what is written? Okay, let me tell you. Suppose if the patient is coming to you and that girl, especially female lady is there, that breast is very sensitive to touch. This is a breast and that is very sensitive to touch and that is heavy feeling. When the patient will be walking, so there will be a pain. क्यों? जब जब वो चलेगी तो क्या होगा? ब्रेस्ट मूव करेगा, हिलेगा. सो देयर विल बी अ पेन. सो क्या करेगा? What the patient, lady patient will do? She will hold the breast tightly, or either she will be wearing the bra. तो वो क्या करेगी? ब्रा भी टाइट पहनती है. So there will be a no motion. So there will be a relief. That's why the patient is holding the breast, especially in case of a brainia. Okay, so don't get confused. Another symptoms: pressure as if a cap of lead pressed over the whole skull. Suppose if the patient is coming to you and that patient is feeling something pressure is there over the skull, then only we can think about this medicine. But I want to correlate with the another medicine. इस symptoms को किसी दूसरे मेडिसिन से मैं कंपेयर कर रहा हूं. कोई ऐसा मेडिसिन है जो कि टोपी पहनने से आराम मिलता है. The patient is getting relief by while wearing the hat. Can anyone tell? The nitric acid. Yes, nitric acid, very good. Nitric acid is the medicine. Very good. Okay, nitric acid is the medicine. Okay, another symptoms: periodical headache every third or seventh day. Suppose if the patient is coming to you and that patient is telling, डॉक्टर साहब हर तीसरे दिन मुझे सर दर्द होता है, हर सातवें दिन दर्द होता है, then only we can think about this medicine. But can anyone tell me the name of medicine if there is a headache only seventh day? सेवेंथ डे ही हेडेक होता है. क्या क्या मेडिसिन है? टेल मी. Sanguinaria. यस वेरी गुड जोशना. sanguinaria and silicea and sepia and sulfur. Okay, so these are the medicine. S for 7, S for 7th. Okay, so don't get confused. स से 7, स से 7th day. Okay, so headache will be there every 7th day. Then we can think about this medicine: sanguinaria, silicea, sepia and sulfur. Okay, but if there is a headache on 6th day, अगर 6th day headache हो रहा है तो कौन सा मेडिसिन सोचेंगे? The name of the medicine is Magmure.
Okay, Magimure. But if there is a headache, especially on 8th day, what is the medicine? Iris. Iris, very good. Iris versicolor, okay. Iris versicolor, okay. So just try to remember. Very good. Another symptom, occipital headache, occipital pain after lying down with sense of weight. Suppose if the patient is coming to you and this is the occipital area. There will be so much pain and the patient is feeling so much heaviness. इतना भारी भारी लग रहा है, सर भारी भारी लग रहा है. Then only we can think about this medicine. Okay, so don't get confused. Cough relief by getting on hands and knees. You can see knee. The patient is putting the hand over the knee and the patient is feels better. अब आराम लग रहा. Now I'm feeling better. So can anyone tell me for this symptom और क्या medicine है? Can anyone tell? Medorinum. Okay. Medorinum and carcinosine. Okay. Carcinosine is the medicine. Okay. So just try to remember. Another symptoms, sluggishness of all organs and function. Means suppose if the patient is coming to you and he is suffering from obstructive liver and the patient is suffering from the dengue or malaria. So you will find all the organs of the patient will be acting slowly. Means organ भी क्या होता है, slow organ काम करेगा and there will be a debility, there will be a weakness of the whole body, lean thin body will be there and cachexia feeling is there. क्या होगा, उसको कैचेक्सिया हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा और ऑर्गन भी स्लो काम करेंगे. तो हम लोग क्या इस मेडिसिन को सोच सकते हैं. ओके. Another symptom, perspiration relieves all symptom except the headache. भाई कभी सिम्टम सुना है पसीना से आराम मिलता है? यस, यूपेटोरियम इज द मेडिसिन. बट सब कुछ आराम मिलेगा लेकिन उसका जो सर दर्द है ना वो पसीने से आराम नहीं मिलता है. ओके, बट इफ द पेशेंट इज गेटिंग रिलीफ बाय पर्सपिरेशन वी कैन कोरिलेट और कंपेयर विद द अनदर मेडिसिन. दूसरे मेडिसिन से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. तो कैन एनीवन टेल मी और क्या क्या मेडिसिन है जिससे पसीने से आराम मिलता है? यस, वेरी गुड इंदुजा. नेट्राम्यूर. Sorinum. यस, वेरी गुड. Sorinum. यस, वेरी गुड. सोराइनम. एंड Veratrum. yes, very good. Veratrum, very good. Veratrum album, very good. And Caladium and arsenic album. Okay, arsenic. ये जो दो मेडिसिन है ये कहाँ पे मिलेगा? इस किताब में मिलेगा. ये A name of book, A Synoptic Key to the Materia Medica, which is written by Cyrus Maxwell Boger. ये बोगर की किताब में लिखा है ये दो मेडिसिन के बारे में. ठीक है, ये तीन आपको एलएन में मिल जाएंगे मक्सोल के ब्रैकेट में. But in case of a Maxwell, there is written the patient is not getting relief by perspiration. Okay, the medicine is Maxwell. Okay. Another symptom, sensation as of a metal or cap on head. What we have already discussed. The patient is feeling something heavy weight on the head is there, and this symptom is written in this book. The name of the book is A Synoptic Key to the Materia Medica, which is written by Cyrus Maxwell Boger. Okay. Another symptom, painful cough from laryngeal tickle. It hurts head and must hold the chest. Miss, when the patient is oof, I'm having so much pain while the patient is coughing, especially in the larynx. There will be a pain and it is hard to the head. क्या होता है, सर में भी दर्द हो जाता है, इतना तेज खांसी होता है कि सर में भी लगता है. And the patient is putting hand over the chest. क्या होता है, छाती पे हाथ रख के खांसता है. And you will find in this book, this symptoms you will find in this book. Okay. And this patient is always feels better. जब तक बात करें, क्या हो, क्या हाल है, खाना वाना खाए? The patient is always feeling better while talking to somebody. If he will be talking, so he will always feels better. But he will continuously talk to somebody because he's getting relief. But can anyone tell me another medicine where the patient is getting relief by
कन्वर्सेशन, स्पेशली इन केस ऑफ अ हेडेक, जब सर दर्द करेगा तभी वो बात करेगा। यस, वेरी गुड, डल का मारा। yes, excellent, dal ka mara, very good, excellent, dal ka mara is the condition, very good, medicine, sorry, not condition, medicine, very good, excellent. This is the relation, and this medicine is followed by natramure and sepia. Okay, and we can compare with the chelidonium, podophyllum, lycopodium, especially in case of a jaundice. Okay, another symptom like brania is the nearest analog, having a free sweat. मतलब अगर हमने पहले ही बताया कि लाइक अगर यूपेटोरियम हम सोच रहे हैं तो डेंगू के केस में और भी मेडिसिन हो सकते हैं, बेलाडोना, ब्राइनिया भी सो सकते हैं, रस्टॉक्स भी सो सकते हैं। सो दिस इज द वेरी क्लोज रेमेडी टू द यूपेटोरियम। यूपेटोरियम कई बार क्वेश्चन आ सकता है, ये मान लो ब्राइनिया गायब कर दिया और ये पूरा उठा के लाइन दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स, सो यू हैव टू फिल brainia. Brainia is the nearest analog. Okay, but pains keep quiet while eupatorium is having a scanty sweat. Brainia में बहुत ज्यादा sweating होता है, but in case of a eupatorium, scanty sweating is there. Okay. Another medicine we will read, that is euphrasia. You can see this is a euphrasia. Okay, but can anyone tell me which part of the plant is used in the preparation of medicine? यूफ्रेजिया का कौन सा पार्ट दवा बनाने के लिए यूज करते हैं? होल प्लांट। Yes, होल excellent, प्लांट। very good. Whole plant is used, very good. Whole plant, very good. But can anyone tell me this medicine is prepared under which class? कौन से क्लास में इस मेडिसिन का प्रिपेयर होता है? सेकेंड क्लास। Yes, very Second. good. But what is the common name of this medicine? Can anyone tell? Okay, so I was talking about this medicine is prepared under class 2. Okay. Okay. So what is the common name of this medicine? Eye bright. Yes, Eye very bright. good. Excellent. Eye bright. Okay. Eye bright. Okay. Eye bright. Okay. Suppose आप भूल गए, आई ब्राइट मतलब ये दवा किसके लिए सबसे अच्छी है? आंखों के लिए अच्छी है। बट अगर आप भूल गए कि किस क्लास में प्रिपेयर हो तो याद रखना आंख के लिए ये दवा है। दिस मेडिसिन इज फॉर आई, सो हाउ मेनी आईज यू आर हैविंग? दो आंख है। ओके, एक आंख, दो आंख, तो दिस मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड अंडर क्लास 2। ओके, सो कैसे याद रखेंगे? एक आंख, दो आंख, सो दिस मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड अंडर क्लास 2। ओके, सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, एंड दिस होल प्लांट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। This whole plant is used in the preparation of medicine. Okay, and this medicine is proved by, can anyone tell name of the prover? अगला क्वेश्चन आता है कि who has proved? Hahnemann. Yes, very good. Dr. Christian Frederick Samuel Hahnemann is the man who has proved this medicine. So how you will remember कि कौन सा क्लास में प्रिपेयर होता है? Tell me. Second. Yes, Second second class. Why? Because if the person is having two eyes, so just try to remember कि दो आंख है, so this medicine is prepared under class 2. Okay, and common name is eye bright. So what is the family? Can anyone tell what is the family of this euphrasia? Scrofulaceae. Scrofulariaceae. Very good, very good. Scrofulariaceae is the family. Sometimes you will get the question, so what is the family of Scrofulariaceae? I mean, what is the family of euphrasia? So answer will be Scrofulariaceae. Okay, so don't get confused, just try to remember. Okay, this portion I have already discussed. Okay, so now we will talk about the symptoms of euphrasia. Bad effects from fall, contusion or mechanical injury of the external parts. Suppose if the patient is coming to you and that patient is having a history of falling, if there is a contusion, what is the meaning of contusion? Contusion means if there will be a congestion of the blood. क्या होता है? चोट लग गया, खून नहीं निकला, अंदर जमा हुआ. This is the meaning of contusion. Then only we can think about this medicine. But when we will think about arnica, contusion is there,
but there is a here the patient is touching, there is a no that type of pain. But in case of arnica, you will find sore limb bruise feeling is there. Oh, please don't touch, I am having so much pain, मुझे बहुत दर्द हो रहा, please हाथ मत लगाओ, please. The patient will explain like that. And this is the arnica patient. Okay, arnica patient. So don't get confused, just try to remember. Okay. Another symptoms, lateral affection of the mucous membrane, especially of the eyes and nose. Means suppose if the patient is coming to you and that patient is having a discharge from the eyes, you can see there is so much discharge from the eyes and associated with the nose complaint. अगर आंख के साथ nose complaint है, so we can think about this medicine. And this medicine we can also think if profuse acrid lacrimation with profuse bland coryza is there. Means if there will be a bland coryza का मतलब मोटा, अगर मोटा मोटा माल निकल रहा हो नाक से, and there will be a lacrimation, then only we can think about this medicine. But you will always find, अगर आप आंख देखोगे तो आंखों में हमेशा क्या कहते हैं, पानी दिखेगा. ओके, आंखों में मोहब्बत नहीं देखना, पानी देखना. यू विल फाइंड ऑल द वाटर in the eyes, not love. Okay, just see in the eyes, you will find always water. ऐसा लगेगा अभी रो देगा, अभी रो देगा, रो दू बच्चे की तरह. Okay, so you will find and you will find agglutination in the morning. ऐसे चिपकू देखो, बच्चा जब होता है उठता है तो सुबह देखना मम्मी आँख नहीं खुला. The patient will start crying, baby will crying. Why? Because there will be agglutination, especially in the morning. चिपका आंख रहेगा. You can see here. सुबह सुबह क्या होता है, चिपकू आंख रहता है. So we can think about this medicine. Okay, so don't get confused. Okay. Another symptom, profuse fluent coryza in morning with violent cough and abundant expectoration, aggravation from exposure to warm or south wind. You can see if the patient is coming to you, that patient is having so much discharge from the nose. That's why इतना ज्यादा discharge होता है कि ये देख रहे हो, रुमाल लेके पूछ रहा है, माल निकल रहा है, रुमाल लेके पूछ रहा है. That is a coryza, fluent coryza, and violent cough is there. कोराइजा के साथ कफ भी अगर निकल रहा हो स्पेशली, एंड देयर विल बी एग्रेवेशन फ्रॉम द साउथ विंड. क्या होता है, हवा चल रहा है, कहते हैं पश्चिमी हवा चल रही हो, wind from the south end, then we can think about this medicine. Okay, this medicine we have to think. Okay, another, when attempting to clear the throat of an offensive mucus in the morning and gagging until he vomits and breakfast just eaten. क्या होता है, सुबह क्या करेगा, he is trying to hawking, he is trying to clear the mucus from the throat, and that is a very offensive. इतना बदबू करता है भाई, कितना बदबू करता है, छी कितना बदबू करता है. Especially you will find in the morning, and you will find the patient is having a gagging, vomiting feeling is vomiting feeling is there. Just खाना खा के आया उसके बाद भी vomiting feeling. Then only we can think about this medicine. But can anyone tell me the name of medicine? What I go better after breakfast? उसका चक्कर आ रहा है लेकिन नाश्ता कर लेगा तो चक्कर ठीक हो जाएगा. What I go better after breakfast? Which medicine? Alumina. Yes, very good. Alumina. Alumina is the medicine. Very good. Profuse expectoration of mucus by voluntary hawking. Aggravation on rising in morning. Voluntary hawking means the patient he is trying to expectorate, trying to the patient is trying to expectorate. It will always aggravation, especially in the morning. But these symptoms I want to correlate with the another medicine. यहाँ पे क्या होता है, वॉलेंट्री बार बार करेगा, खा खा थूक देगा. बट द पेशेंट इज हॉकिंग कंटिन्यूअसली एक्सपेक्टोरेशन बट नथिंग्स कम आउट. कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ मेडिसिन? कौन सा मेडिसिन है, एक्सपेक्टोरेट कर रहा है लेकिन माल निकल नहीं रहा है, जमा तो बहुत है छाती में, निकल नहीं रहा है. बताओ कौन सी मेडिसिन है? Antidote. Yes, very good. Antidote is the medicine. Very good, excellent, very good. Another symptom,
amenorrhea with catarrhal symptoms of eyes, nose, profuse acrid lacrimation. If the female patient is coming to you, amenorrhea means absence of menstruation. There is no menstruation. Along with that, if there is a catarrhal discharge or there will be a lacrimation from the eyes, amenorrhea के साथ अगर catarrhal और ये lacrimation हो रहा है, so we can think about this medicine. But I want to correlate with another medicine. Amenorrhea with asthma, which medicine? Amenorrhea plus, Spongia. yes, spongia, very good. And another medicine? Yes, which medicine? Pulse. Pulsatilla. Yes, excellent. Pulsatilla is the medicine. Okay. But this I have written, यहाँ पे मैंने लिखा है एजमा, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से कोरिलेट करता हूं मैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर यू विल फाइंड इन केस ऑफ अ ब्रोंकियल एजमा. क्या ऐसा चीज देखेंगे कि कहेंगे दिस इज द केस ऑफ ब्रोंकियल एजमा? कैन इनमें टेल? ट्रिपल सी. Yes, very good Hinduja, very good. Cusman spiral and Charcut lethal crystal. yes, very good Preeti. Charcut leaden, very good. Charcut leaden, very good, very good. That is Crayola body. Okay, very good. ये क्वेश्चन आता है. This is the most important question. Sometimes you will find Cusman spiral. You will find in which disease condition. Cusman spiral किस disease condition में मिलता है? भाई कौन जम्माई ले रहा है? माइक अपना बंद कर ले जम्माई लेते हुए, ठीक है. सो Cusman spiral you will find in case of a bronchial asthma. Okay, so answer will be bronchial asthma. And Charcot Leyden bronchial asthma. Crayola body, अगर ये आता है क्वेश्चन तो just try to remember triple C. Charcot Leyden, Crayola body and Cusman spiral. Okay, so just try to remember. Another question. Menses painful, regular, now lasting only 1 hour, or late, scanty, short, lasting only 1 day. Suppose if the female patient is coming to you, she will explain, डॉक्टर साहब मेरा होता ही नहीं है पीरियड, अगर मैं पैड लगाऊं तो एक ड्रॉप दिखता है. If I am using my pads, if I am using pads, so I will found only spots is there, few spots is there, there is no proper bleeding. Then only we can think about this medicine. But this point I want to correlate with the gynae and obs. What is the condition? क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? मेनोरिया, हाइपोमेनोरिया. ओके, यहाँ पे क्या होगा? 30 ml से भी कम होता है ब्लीडिंग, ठीक है. 30 से भी कम होता है ब्लीडिंग 30 ml से. ओके, जनरली क्या होता है? 80 ml होता है. ओके, बट इन दिस कंडीशन यू विल फाइंड देयर विल बी अ मेंसेस फॉर 1 day or 2 day only and less than 30 ml. So we can say this is the condition. But I want to correlate. What is the causative? What is the causes? Tell me the causes of hypomenorrhea. Can anyone tell? PCOS. Thyroid disorder. Okay, stress is there. Stress is there. Okay. Yes. Asherman syndrome. Oral contraceptives uses. Yes, very good Hinduja. Excellent. Yes, very good Hinduja. Endometrial tuberculosis. Yes, very good. Excellent. Okay, but someone, Amit has said PCOD. Okay, PCOD के केस में क्या होता है? बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है. Generally, you will find most of the cases, those people who are having PCOD or PCOS, they will be having a menorrhagia. Okay, so don't get confused. Another symptoms, pertussis, excessive lacrimation during cough only daytime. When the patient is coughing, you can see the patient is coughing. At that time, you will find so much watery eyes, means lacrimation during cough while the patient is coughing. And this cough you will find especially in the daytime. क्या होगा? रात में नहीं होगा, सुबह नहीं होगा, लेकिन दिन जैसे होगा. The patient will start coughing especially in the daytime. So what is the another medicine for this symptom? और क्या medicine है? Can anyone tell?
स्टेफिपेग्रिया यस, स्टेविस क्रिया के केस में नाइट में होता है। ओके, एक बार चेक कर लेना। नेट्राम्यूर, वेरी गुड, एंड फेरमेट। ओके, Pyramid. फेरमेट, वेरी गुड। ओके, नेट्राम्यूर एंड फेरमेट। ओके, वेरी गुड। In case of established kriya, I think there is written cough after only dinner. Okay, एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। Another symptoms: vomiting from hawking mucus. Means when the patient is hawking, that will lead to the vomiting. There will be a vomiting. Then only we can think about this medicine. And in the earlier medicine, we have read in the previous class, which medicine? खांसते खांसते उल्टी हो जाता है, which medicine? So Drosera. ब्रायनिया Drosera is the medicine. Drosera. Okay. Another symptoms: nausea and bitterness after smoking. Suppose if the patient is coming to you and you can find there is a vomiting feeling, means I am feeling I should vomit, nausea feeling and bitterness feeling after smoking. Okay, but amenorrhea with ophthalmia is there. Okay, if the patient is having ophthalmia associated with the amenorrhea, then we can think about this medicine. But there is a smoking. I want to tell you, I can correlate with the surgery. Okay, surgery and gynae. So there is a condition. अगर कोई लड़की सिगरेट पीती है तो उसको कौन सा बीमारी नहीं होगा? Can anyone tell? If the lady is having a smoking, so there will be a no disease condition. Which disease condition will be not having? कौन सा बीमारी नहीं होता है? एंडोमेट्रियोसिस एंडोमेट्रियोसिस। अब इसका मतलब पीना नहीं है, ठीक है, ये पीना नहीं है, फायदा तो है, लेकिन you should not have. Okay, so this is the condition, endometriosis in case of a gynae. But surgery से कोरिलेट करके कौन सा बीमारी? Yes, very good, very good. Ulcerative colitis is the condition. Very good. अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये कंडीशन मतलब अगर कोई सिगरेट पीता है तो मेल के केस में अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं होगा, फीमेल के केस में, और मेल फीमेल दोनों में अल्सरेटिव हो सकता है, लेकिन फीमेल के केस में एंडोमेट्रियोसिस। ओके, another symptom is expectoration in daytime only, less on lying down at night. Okay, suppose if the patient is coming to you and there will be a expectoration, a cough, especially in the daytime, what we have already discussed, and this you will find the name of the book is, बोगर की किताब का नाम क्या है? टेल मी, मैंने बताया अभी, टेल मी। synoptic key to material Yes, very good Archie. A synoptic key to the materia medica which is written by, इसका पूरा नाम क्या है? साइरस मैक्सवेल बोगर। Yes, very good, excellent, very good Archie. साइरस मैक्सवेल बोगर। ओके, तो ये पूरा नाम कई बार याद रखना, बिकॉज समटाइम्स यू विल गेट द क्वेश्चन व्हाट इज द फुल नेम ऑफ बोगर। सो ऑप्शन में क्या होगा? साइरस मैक्सवेल बोगर दे देगा, एक तो गाइरस दे देगा, तो साइरस और गाइरस नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो साइरस याद रखना है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द सिम्टम यू विल फाइंड इन दैट बुक। यवनिंग व्हेन वॉकिंग इन ओपन एयर, जब यवनिंग, देखो अभी कोई यहाँ पे यवनिंग ले रहा था पढ़ते पढ़ते। ओके, बट इफ द पेशेंट इज वॉकिंग एंड ही इज टेकिंग यवन, देन वी कैन थिंक अबाउट दिस मेडिसिन। बट कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ मेडिसिन? दूसरी मेडिसिन है कॉन्स्टेंटली स्ट्रेचिंग फॉर आवर्स और यवनिंग फॉर आवर्स, विच मेडिसिन? एसेरम, एसेरम यूरोपियम। ओके, ओके, दिस पेशेंट इज ऑलवेज फील्स आफ्टर कॉफी, कॉफी पीने के बाद मजा, उफ क्या मजा है यार कॉफी पी के। बट आई वांट टू कोरिलेट with another medicine. If the patient is having aversion to coffee, कॉफी देखते ही कहेगा ना बा আমি खाबो ना, कॉफी पसंद ही नहीं है उसको, कौन सा मेडिसिन है? सल्फ्यूरिक एसिड, कैमोमिला। कैमोमिला, पार्टिकुलर मैंने पूछा जो ना, तो कैमोमिला, इसमें क्या है? एवर्सन, ठीक है, याद रख लेना, AC। ओके, C फॉर कैमोमिला, A फॉर एवर्सन। बट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है? एवर्सन टू स्मेल ऑफ कॉफी, कॉफी से नहीं,
उसके स्मेल से दिक्कत है ना। देयर वाज अ माय जूनियर इन माय कॉलेज, देयर इज अ वन जूनियर, मैं कहता हूँ चले कॉफी पीने, ना 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 दादा, आई विल नॉट हैव कॉफी बिकॉज आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ अ कॉफी। एवर्सन टू स्मेल ऑफ अ कॉफी, द नेम ऑफ द मेडिसिन इज सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अगर सिम्टम आएगा एवर्सन टू स्मेल ऑफ कॉफी, ओके, एस पर स्मेल होगा और एस पर सल्फ्यूरिक एसिड। ओके ओके ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम ले रहे हैं, थोड़ा सा फॉरेंसिक से कोरिलेट करता हूं। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल क्या नेम है? कैन एनीवन टेल? आता है ये क्वेश्चन? Oil of vitriol. Oil of vitriol. यस, वेरी गुड, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल क्यों कहते हैं? कैन एनीवन टेल? हिंदी में तेजाब बोलते हैं इसको, तेजाब। ओके, तेजाब। ओके, सो इट इज कॉजिंग द परमानेंट डिस्फिगरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकोसा। क्या होता है, किसी का ब्रेकअप हो गया, अच्छा तूने मुझे धोखा दिया, ले कल आया मुंह पे ही फेंक के चला गया। वाई? बिकॉज उस पे उसको पता है कि इसको फेंकेंगे तो उसका चेहरा, खूबसूरत जितनी भी खूबसूरती है सब जल जाएगा। दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज डूइंग परमानेंट कॉजिंग द डिस्फिगरेशन ऑफ द स्किन। क्या होगा, जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा जब तक प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराए। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। सो याद रखना है ऐसे, कई बार क्वेश्चन आता है। ओके, and this medicine we can also think in case of a first stage of measles is there, so we can think. Okay, another question is there, this coffee, irresistible desire for coffee, which medicine? Can anyone tell? कॉफी के लिए पागल रहेगा, जैसे दारू के लिए मैंने बताया। अंगूस्टेरा वगैरह। यस, वेरी गुड, अंगुस्तुरा वेरा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, अंगुस्तुरा वेरा, वेरी गुड, excellent. And this is the relation. This medicine we can think pulsatilla in affection of eyes, and we can think if there is a reverse in terms of what I have already explained, we can correlate with Allium cepa, I have already told. And this medicine we can think if there is aggravation, especially indoors, मतलब घर में अगर बैठा है तो भी हो रहा है, warm में, and moisture is, and if there is a aggravation after exposure to south end, and if someone is touching, so there will be aggravation, so we can think about euphrasia. Okay. Another medicine we'll read, that is ferrum metallicum, and this is a one type of element or metal. Okay, so generally ये क्या है, आयरन है। Okay, this is iron. Okay, this is iron. Okay, this is iron. So can anyone tell me this medicine is prepared under which class? Can anyone? Class 2. 7। चीटिंग कर लिया, तू जो बोला वो चीटिंग किया, क्योंकि वहां गलत लिखा है। ओके, क्लास 7 इज द राइट आंसर। ऑल द कार्बन्स ग्रुप, जितने भी कार्बन ग्रुप हैं, दिस इज प्रिपेयर्ड अंडर क्लास 7। ओके, क्लास 7 में। सो व्हाट इज द नेम ऑफ प्रूवर? कैन एनीवन टेल? प्रूवर? Hahnemann. Yes, very good, Hahnemann. very good, डॉक्टर Indija. हैनीमैन। Yes, Christian Frederick Samuel Hahnemann. Hahnemann is the man. Hahnemann is the man who has proved this medicine. Okay, so just try to remember. यहाँ पे मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना। ये जो है ये 7 है, ठीक है। दिस इज द क्लास 7 and this medicine is prepared under class 7. So just try to remember. Another symptoms. Let's talk about the symptoms of ferrum metallicum. Person of a sanguine temperament, petty, quarrelsome, disputative, easily excited, least contradiction, angers, and amelioration from mental exertion. Means, suppose if the patient is coming to you, sanguine temperament. Sanguine means those people who are having a plethoric congestion over the face. Plethoric congestion. And those people who are having a too much fun, like we can say, like you have seen na Kapil Sharma. He is a very funny. He is having a sanguine type of temperament. And sometimes this patient is a very petty and quarrelsome. कहते हैं ना झगड़ालू. If you are finding the झगड़ालू word, that is the ferrum metallicum. Always fighting with somebody. बिना बात का ही लड़ाई. अगर तुम सीधे जा रहे हो तो आके धक्का मार देगा तुम्ही को. हे तुम धक्का क्यों मारे? He will say, why you have pushed me?
This is a ferrum metallicum patient, and if there is any contradiction, so he cannot tolerate. Okay, but the patient is always feels better. अगर वो कुछ काम करता, पढ़ाई लिखाई करता, if he is studying or if he is doing any mental work, so he will be getting relief. कोई भी mental work करता है तो उसको आराम मिलता है. Okay. So this is a sanguine temperament. So I want to tell you the different of four types of ये है, four types of temperament is there. Okay, four types. एक होता है sanguine, ये जो होता है fun होता है, एक जो enjoy करता है. Okay. Another is somebody is having a power of control. That is a choleric type of temperament. And somebody is very cool, calm. धोनी को देखा है ना, महेंद्र सिंह धोनी, ऑलवेज कूल एंड काम, वॉट एवर द सिचुएशन इज देयर. इंडिया को अगर चाहिए एक बॉल में 6 रन, तब भी कूल एंड काम, एंड एट लास्ट ही विल हिट एंड इंडिया विल वन. ओके, सो this type of constitution or cool calm constitution is there, that is a phlegmatic type of temperament. And some person you will find always melancholic, and sometimes you will find the perfection and order is there. Then we can think about melancholy type of temperament. Okay, ये मैंने extra बताया. Okay, so this is a four type of okay temperament. Okay, another symptom, irritability, slight noises, crackling of paper drive him to despair. अगर this patient is a very sensitive, if there will be a movement motion of the paper, क्या होता है, अगर कट कट कर पेपर भी थोड़ा सा आवाज कर दिया ना, इसका दिमाग उल्टा हो जाता है. ए क्या कर रहे हो, कोई अगर हिला रहा हो पेपर भी, पलट रहा हो पन्ना तो भी. Okay, these symptoms I want to correlate with another medicine like a serum europeum is there, where there is a written oversensitive to the nerves and driving to despair, especially if there is a crackling of paper is there. अगर क्या होता है, थोड़ा भी पेपर हिल जाता है तो भी, but why there is, because that patient is very sensitive, over sensitive to the nerves. क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव नर्व होता है, इसलिए सेरम में ऐसा होता है. ओके, सो डोंट कंफ्यूज. Another symptom, headache, hammering, beating, pulsating. Pain must lie down with aversion to eating and drinking for 2 or 3 4 days every of 3 weeks. Okay, every 2 or 3 weeks. Okay, headache is there. What type of headache you will find when ऐसा लगता है कोई हथौड़ा मार रहा, oh someone is beating in my head, please, and the patient is getting relief by lying down. That's why he want to always lie down. Okay, and there will be a pain, headache, aversion to eating or drinking. मतलब वो अगर खाएगा पिएगा तो भी एग्रवेशन हो सकता है, so he will avoid to eat. Okay, and that will be always return 3 to 4 days or every 3 weeks you will find. Okay, so this is a ferrum metallicum patient. Another, hemorrhagic diathesis is there, blood bright red and coagulates easily. इतना मतलब hemorrhagic diathesis, bleeding tendency is there. Diathesis का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू ऑकर अ सेम डिजीज कंडीशन. जैसे उसको ब्लीडिंग हो रहा, दवा दे दिया, फिर 2 महीने बाद हो गया. मीन्स वाई, बिकॉज द पेशेंट इज हैविंग अ डेवलप टू सेम टाइप ऑफ डिजीज कंडीशन. ओके, regurgitation and eructation of a food in mouthfuls and without nausea. Means when the patient is coming to you and that patient is feeling so much mouth feeling, ऐसा लगता है मुंह भर गया, गला भर गया पूरा. Okay, and but there is a no nausea, and these symptoms we can compare with the lycopodium. In case of a lycopodium, you will find eating little causing fullness of the throat. थोड़ा ही खाएगा, मम्मा एक रोटी खाने से ही पेट भर जाता है. When the patient is coming to you, वो कहेगा थोड़ा सा डॉक्टर साहब खाना खाता हूं ना, पेट भर जाता. While eating little causing fullness of the throat. Okay. Another symptoms, canine hunger or loss of appetite with extreme dislike for all kind of food. Means sometimes either canine hunger होगा, means he is having a so much hunger, either he will be having a loss of appetite. मतलब either उसको भूखड़ होगा, either भूख ही नहीं लगेगा, दो ही कंडीशन है. ओके, vomiting immediately after midnight of ingest, as soon as food is eaten, lift table suddenly with one effort vomits and everything eaten and can sit down and again. मतलब क्या है, suppose if someone is went to the restaurant and he is ordering all the food, he is eating, after eating he will went
and he will vomit. You can see in the pic. In one shot he will vomit. एकदम पूरा सारा माल बाहर आ गया. फिर आएगा, ओह नाउ आई एम फीलिंग बेटर. अगेन आएगा, अगेन ही विल सिट ऑन द टेबल, beside the table, and again he will eat. This is the ferrum metallicum patient. Okay, so don't get confused, just try to remember. Diarrhea, undigested stool at night or while eating, or painless, or drinking, or painless with a good appetite of conjunctive. Suppose if the patient, conjunctive का मतलब होता है क्या, severe kind of बीमारी हो गया, especially tuberculosis, and the patient is suffering from tuberculosis or that type of severe kind of problem, so there will be a diarrhea and there will be a no appetite, means sometimes good appetite is there, especially in case the patient will be lean thin, and watery discharge is there, watery stool is there, which is undigested. And when it will happen, रात में होता है, while the patient is eating, so you will find this condition. And this patient is always feels better when walking. Okay, जब जब वो चलेगा उसे आराम मिलता है. Weakness oblige to patient to lay down. मतलब क्या होगा, चलेगा तो आराम मिलता है, लेकिन वीकनेस इतना हो जाता है कि वो लेटता है तो आराम मिलता है. ओके, cough only in daytime, what we have already read, especially in euphrasia, and similar you will find the euphrasia is the medicine and natrum mur is there. Okay, euphrasia. Okay, weakness from merely speaking or walking, so looking strong. Suppose if the patient is coming to and that patient is feeling so much weakness, then we can think about this medicine. And this patient is having a toothache and that patient is getting relief by cold water. अगर पेशेंट ठंडा, ओह कितना आराम लग रहा, बहुत दर्द हो रहा था, now I'm feeling better, now I'm feeling better. This is the ferrum metallicum patient, and there are so many medicine. What are the medicine? Can anyone tell? Tell me. What? Sophia. Yes, coffea is there, brania is there, natrum sulf is there. Okay, bismuth is there. Very good, very good, etc. There are so many medicine. Okay, so where the patient is getting relief. But अगर गर्म पानी पीने से आराम मिलता है तो there are medicine like macphos is there or arsenic is there. Okay, another attempt to eat brings on diarrhea. अगर जब जब वो खाता है तो क्या होता है, डायरिया हो जाता है. ओके, एंड विथ कफ पेन इन द ऑक्सीपुट, जब जब खांसी करेगा ना उसके ऑक्सीपुट में दर्द होगा. ओके, there will be a pain especially in the occiput region while the patient is coughing. Okay, and this patient is always feeling on the early morning chill at 4 a.m. Okay, but chill beginning in the thigh, which medicine? Chill beginning in the thigh. Puja. Yeah, thuja is the medicine. Very good. Chill beginning in the thigh होगा तो thuja. A chill at 4 a.m. ferrum is the medicine. Okay, better leaning or head on something. The patient is putting the head over the table or over the something, then patient is feeling better. Better क्या होता है, कॉलेज में क्या होता था, जब सर दर्द होता तो हम लोग क्या करते थे, we used to put our head over the table and we are feeling better. So similar symptom you will find in case of a ferrum metallicum, and this is written, the name of the book is A Synoptic Key to the Materia Medica, which is written by Cyrus Maxwell Boger. Okay, another symptom, dyspnea or palpitation, ambulation from motion, always feels better when walking. Dyspnea का मतलब सांस लेने में दिक्कत. I am feeling better when walking. The patient is saying, if I am walking, so I am feeling better. Okay, so we can think about this medicine. And this is the relation. You can see this is the complementary medicine. What is the meaning of complementary? Complete the action of previous medicine. Okay, पहला मेडिसिन जो काम किया उसके बाद रुक गया एक्शन, उसके बाद हम ये देते हैं कि ये काम करेगा पूरा. ओके, तो एलुमिना एंड सिंकोना इज द मेडिसिन, एंड सिंकोना वी कैन थिंक दिस इज द वेजिटेबल एनालॉग. कई बार क्वेश्चन आता है विच इज द वेजिटेबल एनालॉग ऑफ फेरमेट, सो आंसर विल बी सिंकोना. ओके, and this we can think. Okay, should never be given in case of a syphilis. Suppose if the patient is suffering from syphilis or if the syphilitic type of condition, should not be given because it will
एग्रोवेट द कंडीशन। सिफिलिस के केस में अगर देंगे तो ये कंडीशन को बढ़ा देगा। ओके, एंड वी कैन थिंक दिस पेशेंट इज, अगर सीटिंग काफी देर तक बैठता है तो एग्रोवेट करता है, बट जैसे वो चलेगा उसको आराम मिलता है। ओके ओके, थैंक यू।